Good morning class. I, Gaurav Kumar Dwivedi, welcome you all to today's class of science. As you can see class, just in front of you, a pictorial representation of one of the biological organisms has been given. So this pictorial representation reminds you of the germs or the microbes which you have already discussed in your previous classes. Before going ahead, I will be giving you a quick revision of what we have all discussed in your previous classes. So basically, this chapter is all about germs and diseases, the usefulness of these microbes. Basically, the first and the foremost thing, that is, all these diseases or majority of the diseases are caused by very small tiny organisms which cannot be seen by our naked eyes. What I am trying to say is, that is, ये जितने भी बीमारियां हमें होती हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियां हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें हम अपनी इन आँखों से देख नहीं सकते हैं. And that is the most possible reason why we usually get affected by these diseases or by these germs. Alright, so since these microbes or microorganisms are very very small as well as living, whenever we call the term microbes or the organism, these are also tiny organisms just like your ant and everything is there. Okay, so these are very very small, and since they cannot be seen by our naked eyes, so we use the instrument which is known as microscope. Alright, going ahead, you all have studied what are the useful things carried out by these microbes, like they help in making of various kinds of antibiotics which cure us, as well as they give us quick relief from various kinds of diseases. Next, they are also used for preparing the cakes or the pastries which you all love a lot in your birthdays or in any kind of celebrations which you feel like enjoying it. Apart from that, they are also used for fermentation processes, like जब भी आपको इडली खाने का मन होता है या डोसा खाने का मन होता है, तो या आप घर पे खाएं या बाहर खाएं, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है. लेकिन जब आप मम्मी पापा से अपने पूछेंगे या अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, so before preparing all these stuffs, like whether we are talking about idli or dosa, they used to keep it overnight or prepare the paste of it overnight so that it can ferment and it can give a good taste as well as sweet and delicious. Alright, last but not the least, because the usefulness of microorganisms is very much, we cannot just count by 1, 2, 3 or 4 in this book. बहुत ढेर सारे usefulness हैं, बहुत ढेर सारे इनके harmfulness भी हैं. Alright, so in the topic usefulness, okay, the most important, which they play a vital role in cleaning our environment by decomposing the waste materials which we throw here and there. And basically we are talking about which kind of waste materials? Biodegradable और organic waste materials. मतलब यही microbes हमारे environment के जितने भी कचरे होते हैं, कूड़े होते हैं, organic waste होते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, खराब हो गए food items, okay, like your chapati or rice or whatever stuffs, when they get spoiled and when you throw them, so these microbes only, they eat them and they get decomposed. That is, they decompose that organic matter into soil. Alright, so without any delay, since in the last class you have already started with harmful microbes. Okay, so whenever we are talking about harmful microbes, so basically harmful microbes are what? All those microbes which are not useful to us and they are causing some or the other kinds of diseases. Okay, so when we are talking about the diseases,
So it can be any. All right. So before we will be going into detail, let's have a discussion of today's class. All right. So our today's topic is basically the subtopic of this germs and diseases. So today we will be starting with the explanation part, that is how these diseases they get spread from one person to another. Like बीमारियां तो हो जाती हैं, लेकिन वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे हो जा रही हैं. Like if you can see the very best example which we all are aware, COVID-19 कोरोना केसेस. क्या हो रहा है, एक आदमी दूसरे को छूता है या बाई मिस्टेक, नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझकर या अनजाने में अगर कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो रहा है, उस दूसरे पर्सन को भी कोरोना हो जा रहा है. ओके या किसी भी मटेरियल पे इन विच और विच इज कैरिंग द COVID-19 virus, corona virus, so that gets transferred to the healthy person. Okay, so how this spread of diseases occur, we are going to discuss these in our today's class. So the very first thing is, that is all these germs they spread diseases by only these 4 or 5 methods, out of which food and water can be together taken into one, because this food and water are what, like if our food gets contaminated or our water gets contaminated and these contaminated food or water is taken up by us. Okay, what I am trying to say is, अगर हमारा खाना या फिर पानी किसी भी तरीके से दूषित हो गया, गंदा हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, ऑलराइट, और उसी कंटामिनेटेड फूड या वाटर को जब हम अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं या पी लेते हैं, so in that case what happens, that contamination gets transferred into our body and we start suffering from one or the other kinds of diseases. The same thing is here in the case of air or direct contact, like just like I gave you the example of COVID-19. Another thing we will be discussing in detail, and the last but not the least, that is our insect bites. Okay, let us go ahead with these in a detailed explanation. The very first one, that is through contaminated food and water. Okay, if you can observe here class, the very first picture, I hope all of you love these burgers, pizzas and the various foodstuffs which are being present, or the spicy items, the fast foods which are present in our markets today. Okay, whether we are talking about Domino's or it is the roadside burger shop or the Burger King, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, most of the students they like the fast foods which are being available outside. Okay, now अगर by mistake, okay, because all these things we cannot observe, अगर हम देख लेंगे, अगर हमारे पास ऐसी आंखें होती कि हम इन फूड स्टफ्स पे देख पाते कि अरे अरे अरे, ठीक है, माइक्रोब बैठा है, जर्म्स बैठे हैं, तो आप नहीं खाते. बट रीज़न क्या है, हम नहीं देख सकते हैं इन्हें, और जब हम देख नहीं सकते हैं तो हमें क्या दिखता है, खाली वो डिलीशियस बर्गर, खाली वो डिलीशियस पिज़्ज़ा, तो हम उसे फटाफट खा लेते हैं. And the moment we eat these contaminated foods, we start suffering from typhoid, cholera or various other diseases. Alright, this is one of the examples. Moving on to the second example, we have this thing, that is this. Okay, this is a very common mistake which very few people do it. All those people who are very much concerned about their health, they do not do these activities, but some of the peoples
who are not taking care of themselves, they perform this incident. What the incident is, I am sharing you. Sometime what happens, our food items get spoiled a little bit, that is the spoilage has started just now. हमारा कोई भी फूड आइटम क्या हो गया, खराब हो गया, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे थोड़ा सा ही तो खराब हुआ है, हम खा लेते हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है. बट दिस इज द वेरी कॉमन मिस्टेक. इट इज नॉट लाइक दिस. अगर चाहे वो थोड़ा सा खराब हो, चाहे वो ज़्यादा खराब हो, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप रिकवर कर लोगे या आपको कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स, अगर आपके इम्यूनिटी पावर कम है और ये उस पर ओवरकम कर गए, तो देन immediately you will start suffering from one or the other kinds of diseases. So children, it is my humble request, do not eat any kind of food items which are being spoiled or which has just started spoiling. Alright, and please suggest your father and mother as well to not to do or not to eat the food items which are spoiled. Moving on to the next, this is the most common mistake which we do. Alright, what is the mistake here? In this picture, if you can see here, this is a roadside vendor who is selling all the eatable foodstuffs being fried in a oil or in various kinds of paste which are being kept in open. ये उन सारी चीज़ों को, ईटेबल आइटम्स को सेल कर रहा है और बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी हाइजीनिक कंडीशन के. आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो कोई कवरिंग है, ना तो कुछ है, ठीक है. ओपन ऑयल्स में फ्राई किया जा रहा है, फिर उसी को रख दिया जा रहा है और बाहर. अब सिचुएशन क्या होती है कि ये कॉमन सिचुएशन है, चाहे वो बाहर की हो चाहे घर की हो. घर में कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो हमें उसी से समझना है. समझने की कोशिश करिए. बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. ओके, बाय मिस्टेक कोई कॉकरोच, कोई फ्लाइज या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आके बैठ गया, मतलब कोई भी फूड आइटम, कोई भी माइक्रो बाहर गंदी जगह से, लाइक फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर सीवेज और फ्रॉम योर वॉशरूम्स और फ्रॉम सम काइंड ऑफ योर डस्टबिन्स. ओके, तो अगर वो सीवेज नालियों से आया हो या आपके डस्टबिन पे बैठ के फिर इस फूड आइटम पे बैठ जाए, या फिर कहीं और गंदी जगह से आके इस फ्रेश फूड पे बैठ जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ की गंदगी को वो इस फूड आइटम पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा. एंड व्हेन द कंटामिनेशन or the harmful things they get transferred to this food which is fresh, this food also gets contaminated. जैसे ही वो मक्खी या कॉकरोच बाहर कहीं से भी आके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये फ्रेश फूड भी क्या होगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा. एंड द मोमेंट दिस कंटामिनेटेड फूड इज टेकन अप बाय अस, so in that case again we are going to suffer from diarrhea, typhoid, cholera or any kind of other diseases. Is that clear to everyone? Now moving ahead to some more images. This is the situation after eating that contaminated food. अच्छा, तो बहुत लगा, खा भी लिए, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा. अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहा, वेरी वेल एंड गुड. नहीं स्ट्रांग रहा, so you are going to suffer from some or these symptoms like this. If you can see here, the person is holding his stomach because he is having a pain in his stomach. This boy who is there on the bed, he is suffering from fever. One, he is passing his stool or he is suffering from diarrhea. Okay, so this happens when the contaminated food items, they get transferred into our body.
और होगा कैसे, सेम चीज। कोई भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कैसे कंटामिनेट होगा, जब उसके ऊपर बाहर से कोई भी मॉस्किटो, कोई भी फ्लाइज मीन्स मक्खी, और इवन कॉकरोच एज वेल, दे कम फ्रॉम डर्टी प्लेसेस एंड दे जस्ट सिट ऑन योर फ्रेश फूड आइटम्स। ओके, जैसे ही बैठेंगे आपका फ्रेश फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा, और कंटामिनेटेड होते ही वो जैसे ही आप उसे खाएंगे आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रेश खाइए, ताज़ा खाइए एंड गरम करके खाइए। अब क्यों बोला जाता है गरम करके खाइए, उसका भी रीज़न है। रीज़न यही कि एट हाई टेम्परेचर दीज माइक्रोब्स डाई और दे आर नॉट एबल टू ग्रो। जब हम गरम खाना खाते हैं तो गरम चीज़ों में ये माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, या सारे के सारे नहीं तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द माइक्रोब्स मर जाते हैं, और जब ये मर जाएंगे तो हमें हार्म नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट सोर्स फ्रॉम वेयर द कंटैमिनेशन अकर्स। मूविंग अहेड टू द सेकेंड पार्ट। सो द सेकेंड सोर्स इज थ्रू एयर। अब ये सबसे कॉमन है, हम फ्रेश खाना तो खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एयर तो हम फ्रेश कैसे करेंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कोई करता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एयर कैसे फ्रेश होगा, जब हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, और हमें तो केक और पेस्ट्रीज खाने से ही फुर्सत नहीं है, तो प्लांट्स तो बहुत दूर की बात है। तो जब हम कंटैमिनेटेड एयर, दैट इज एयर विच गेट्स कंटैमिनेटेड बाय सम और द अदर पॉल्यूटेंट्स, इतने सारे व्हीकल्स हैं, रन कर रहे हैं, उनका धुआं कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। फैक्ट्रीज हैं, उनका स्मोक कहाँ जा रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और उसी एटमॉस्फेयर से हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो जब भी हम उस कंटैमिनेटेड एयर को अपने अंदर लेंगे, सो वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर काइंड्स ऑफ डिसीजेस। Let us have a look over some of these diseases. But the most common, Akshu is nothing but all of you can guess that. Okay, this is basically we are talking about the common cold and cough. होता क्या है, घर पे क्या सिखाते हैं, मम्मी पापा क्या सिखाते हैं कि अगर किसी को जुकाम है, खांसी है, तो आप हैंकरचीफ यूज करिए whenever you are coughing or sneezing, और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिस इज अ इन्फेक्शियस डिसीज, दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। ये एक जगह से दूसरे जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वाइल कफिंग और स्नीजिंग हमें हैंकरचीफ का यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं क्यों यूज करना चाहिए। Whenever you are coughing or sneezing, thousands of microbes they come out from your mouth and they get mixed into our atmosphere or the nearby surrounding. And when the air which is containing those microbes they get inhaled by a healthy person, मतलब जब कोई बिना हैंकरचीफ के कफ किया या स्नीज किया तो बहुत ढेर सारे माइक्रोब्स हवा में आ जाते हैं, और हवा में आते ही वो क्या होते हैं, जब कोई भी हेल्दी पर्सन उस कंटैमिनेटेड एयर को अपने अंदर ले लेता है, सांस लेता है, इनहेल करता है, तो वो माइक्रोब उसके अंदर भी चले जाते हैं, और फिर शाम को घर पहुंचते पहुंचते उसे भी कोल्ड एंड कफ हो जाता है। मूविंग अहेड विद द सेकेंड वन, दिस इज द क्रॉनिक केस ऑफ कफिंग। ओके, ट्यूबरकुलोसिस, इसको हिंदी में हम टीबी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, टीबी नहीं है, टेलीविज़न की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बायो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। इट इज़ द डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, बी फॉर बॉल। ओके, अब इसमें भी वही है, अगर एक ट्यूबरकुलोसिस पर्सन या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको टीबी हुआ है, अगर वो बिना हैंकरचीफ के कफिंग करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और एयर को कंटैमिनेट कर देते हैं। वही कंटैमिनेटेड एयर जब कोई एक हेल्दी पर्सन ले लेता है
तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्ट हो जाता है और वो भी टीबी से सफ़र करने लगता है। क्रॉनिक केसेस, इसलिए क्रॉनिक मतलब बहुत गंदी खांसी, ठीक है। गंदी खांसी का मतलब लगातार खांसी आना। समटाइम्स वाइल कफिंग यू मे इवन गेट ब्लड एज वेल, ठीक है। पेन होना नेक में, गले में आपके पेन भी हो सकता है, और साथ ही साथ कभी कभी खांसते खांसते आपके मुंह से ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है। इसीलिए हम इसको क्रॉनिक केस बोलते हैं, tuberculosis. All right. Moving ahead to the third source which we have is that is when we come in direct contact with a sick person. जब कोई एक बीमार व्यक्ति है और हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, चाहे हाथ शेक करके, चाहे फ्रेंड की तरह, या उसकी कोई कंटेमिनेटेड चीज़ को हम छू लें। जैसे कोई एक पर्सन है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, एंड इफ यू यूज द पेंसिल और पेन ऑफ दैट सेम पर्सन, or you touch that person, or you shake hands with that person, so in that case also we may get contaminated by diseases. Let us see what kind of diseases are these. This is a, you can say, a much more frightful disease as compared to the previous all which we have discussed. Why? Because this is going to make you or spoil your image. Let us see here. Okay, this is the boy who is having the disease of chicken pox. Okay, so chicken pox is what? It is also a kind of diseases only which spreads from person to person. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माता जी निकल गई है। इंग्लिश में हम इसे चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है। इसीलिए यहाँ पे हम जितनी भी अभी तक बीमारियों के बारे में डिस्कस करे हैं, डिसीजेस के बारे में डिस्कस करे हैं, सो ऑल दीज बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट, जैसे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ये डिसीजेस भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक सिक पर्सन, एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए हमें बचा कर रहना चाहिए। और आप ये भी ऑब्जर्व करे होंगे कि द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स डज नॉट कम्स टू स्कूल और मेंटेन्स अ डिस्टेंस quite a lot so that other people do not get affected by it. Moving ahead to some more but little bit more frightful than this, let us see this. This is known as measles. Okay, measles is what? If you can see, the spots are not there. It is not like kind of bubbles or pimples or boils, you can say, okay, but a kind of, in Hindi, yeah, if you know chahi also you can say this, okay, that is patches are there, छाप पड़ गया है, ठीक है, दाग पड़ गए हैं, okay, so patches of brown colors are being formed all over the body, all over that infected part, okay, so इसको हम बोलते हैं measles. Alright, moving ahead to the last source, that is our source number 4, that is insect bites. अब insect bites में याद रखिएगा, ये आपके क्लास 8 तक ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। इंसेक्ट बाइट में जो मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ये मलेरिया। ओके, मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू दोनों केसेस में द इन्फेक्शन और द डिसीज अकर्स व्हेन एन मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन। ओके, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, द मॉस्किटो इज बाइटिंग और हैज बिटन अ हैंड एंड वी आर एबल टू सी दैट the mosquito is transferring its blood
into the healthy person and as well as sucking the blood from this healthy person. So what happens in this case? The contamination part gets transferred into that blood, and since the blood flows throughout the body, our entire blood gets contaminated. And when our entire blood gets contaminated, we start suffering from malaria. Here also, if you can see, the next part is dengue. Scenario is same. The infection way or the transmission way is also same, but what you can see, the mosquito is different. Okay, so in the case of malaria, the mosquito which is responsible is known as Anopheles mosquito, whereas in the case of dengue, the mosquito which is responsible for this is known as Aedes mosquito. Okay, now the most important case here, that is, we have two different types of mosquitoes here, Anopheles mosquito and Aedes mosquito. Okay, the same question you will be getting in class 8 as well. Please pay attention here. Whenever you are going to write, don't write it down simply Anopheles, but write it down female Anopheles mosquito. Okay, so always remember, malaria is caused by a female Anopheles mosquito. It is not caused by a male Anopheles one. Alright, so always write it down. Female Anopheles mosquito is known for causing malaria. If you can see the differences in the mosquitoes, that is, your Anopheles mosquito is somewhat different as compared to your Aedes mosquito. It is very difficult to identify them, but if you go ahead in the parks or in the morning time or into some of the places where there are more and more plants there, so you will be able to find different types of mosquitoes there. Or if you just compare, don't think about whether it is Anopheles or Aedes, just try to have a view of the mosquitoes which are present inside your home and the ones which are present in your park. आप बस इन्हीं दो जगहों के मॉस्किटोज को ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि एक वो मॉस्किटो जो आपके घर में है वो कैसा दिखाई देता है, और एक वो मॉस्किटो जो आपके पार्क में प्रेजेंट है वो कैसा दिखाई देता है, और आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो दोनों मॉस्किटोज अलग हैं. Okay, so that is why class, always remember that malaria and dengue are not caused by the same mosquito, but they are caused by the different mosquitoes. Okay, so what we have discussed today, that is, today we have discussed what are the different ways by which the germs are getting transferred from a healthy person, from a sick person to a healthy person. Okay, that is through air, food, water, as well as direct contact with the sick person or with an insect bite. Okay, so this is all for today. The rest, that is, in the next class we will be starting with prevention of these communicable diseases, or how we can avoid the transmission of these diseases, or how we can protect ourselves from these diseases. That's all for today. Thanks for being with me. Till that time, stay safe and stay healthy, and also take all the necessary precautions to save yourself as well as your family from this COVID-19. Thank you. Have a nice day.